Hello, dear participants. I, Dr. Abhishek Jaiswal, welcome you in today's discussion of one of the favorite stories of the students, The Last Leaf. This story is written by O. Henry or Philip Sidney Porter. This story is very magnificent and used to teach in intermediate, in degree classes, and also sometimes in the research area. The perspectives is different. And before starting this discussion, we will focus on one of the Arabian proverb that is the central core of this story in another way. जिसको हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है हिंदी में उसी तरह से एक अरेबियन प्रोवर्ब है एंड दैट अरेबियन प्रोवर्ब इज ही हु हैज होप एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लियर लाइन इट इज कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये चीजें बताई गई हैं कि हु द पर्सन हु हैज हेल्थ इज होपफुल उसके पास उम्मीद है एंड द पर्सन हु हैज होप हैज पावर टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड उसके पास दुनिया में कुछ भी कर लेने की क्षमता है सो दैट इज समथिंग दैट आई विल से very important to relate with all the story that is all the storyline of the last leaf. You see, before going ahead, there is a very brief introduction of the author O. Henry because in classes there may be some questions on the pseudonym and what is pseudonym. This is the artificial name. So O. Henry, who has written this beautiful story, is not with his real name. O. Henry is not the real name. This is the real name of O. Henry is William Sidney Porter, who was an American. वो अमेरिकन राइटर थे ये जानना जरूरी है because the country, like setting, time and space decides many things. Culture decides many things. So like if you are Indian, your perspective is different. If someone belongs from Arabian countries, his perspective is different. So if someone belongs from some European countries, and if there is Asian person, everyone has different cultures. That's why their perspectives, their thinking patterns are different. So he was one of the American writer. That's why this is the part of the American literature. And there are some important works of, or there are three basic important works of his collection. That is Sixes and Sevens, that was published in 1911. Second one is Rolling Stones, that was published in 1912, and the last one was Waifs and Strays, that published in 1917. So you see, if we see his span of the life, then he was born in 1862 and 19, and he was died in 1910. So all the works, all the three collections, the best collection of his life, published posthumously. It means after his death. So this is a brief introduction of his life of the author. Now coming directly on the story, that what are the basic elements of the story, what are the settings and the what how many important characters are there in the story. You see, the basic settings, we are talking about the setting. If the basic settings of the story is uh, of the last leaf is Greenwich Village, and that is there in New York. And what is the time? Because the setting, the meaning of the setting is time and space, time and place. So, and then we are talking about the time, then this was the time of the November, and there was very rainy and cold days these times. And basic characters of the story, you see, there are four basic characters, important characters like Sue, John C., Berman, and a doctor. Now, leading towards the next part of the story, that is general understanding of the text, and it starts
with the brief introduction, a brief summary of the story, that the story of the last leaf revolving around few major things, like story rounds around the characters Sue, John C, Berman, and doctors, and one basic things that is non-living thing, that is ivy leaf. Ivy leaf because the last leaf is from the ivy leaf. Ivy leaf is such leaves that can climb, जैसे कि हमारे यहाँ मनी प्लांट होता है, उसी तरह से एक चढ़ने वाला पौधा है, और उसी पत्ते से उसके आखिरी पत्ते पर जो जॉन्सी की साइकोलॉजी हो जाती है, उसी पे पूरा का पूरा स्टोरी बेस्ड है. नेक्स्ट इज there is one linking chain in the story, that is the visit of the doctors. There is three visits of the doctors, and through all the visits we find different situation in the story. There is one thing connecting link, that is soup, and John C prefers a lot. John C likes to have soup, but what happens during her illness, she lost her interest in soup. उसको सूप बहुत पसंद है, लेकिन जब बीमारी का टाइम आता है तो उसने अपने सूप के जो इंटरेस्ट हैं वो भी उससे ख़त्म हो जाते हैं. एंड हर अनदर इंटरेस्ट इज द बे ऑफ नेपल्स, जो कि इटली में है. उसका एक सपना होता है कि एक दिन मैं बे ऑफ नेपल्स को पेंट करूंगी. तो आपको जनरली पता है, व्हेन somebody is not well, when somebody is not healthy, then all the interests are secondary and health is the primary. So सारे के सारे चीज़ें उसकी जब उसको न्यूमोनिया हो जाता है तो खो जाती हैं, भूल जाती हैं, और वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करती है. एंड story moves ahead with one basic character, that is Mr. Burman and his masterpiece. We are just going to see that what is the contribution of Mr. Burman in the story and what is the masterpiece. So just we are leading toward the story's organization of the text, कि story किस तरह से बढ़ती है. Let me tell you that the first section of the story deals with the Sue's roommate John C. Scott pneumonia, because first we should know that Sue and John C. are the very good friends and they are living in the same room, but John C. got pneumonia, and you know the time of the story is rainy, cold weather, where pneumonia was very uh, was was like a disease that was common in that days. Pneumonia was something that was like pandemic in the time when the story is discussed. So pneumonia is like a fever, and John C. caught fever, and story starts with the discussion of the pneumonia in very personification manner. निमोनिया का डिस्कशन जब हम पाते हैं तो देखते हैं कि वेरी पर्सनिफाइड तरीके से निमोनिया को जब व्यक्ति की तरह डिस्कस किया जाता है, एक पर्सन की तरह डिस्कस किया जाता है. सो दिस इज अनदर स्टोरी दैट हु व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स of personification in the story. Then you can go through the text and find out that pneumonia is discussed, that it has icy finger, it is roaming around, it is touching someone. So pneumonia is discussed like uh, a personified element, and John C become the victim of the pneumonia. And it is also shown that pneumonia is not a very gentle person, it is very cruel. That's why pneumonia touched John C. So that is the first section of the story, and the second section of the story, when some John C got fell when John C fell ill, and Sue consulted doctors, and there is the visit of the doctor. The doctor told Sue that John C needed a strong will to live. Why doctor said that she needs a strong will? Because he came to know that the disease is not very fatal, but John C हैज थॉट अप समथिंग. जॉनसी ने क्या किया कि सामने एक आईवी लीफ का खिड़की से दिख रहा था पत्ता, जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, और खराब वेदर की वजह से एक एक करके गिरना शुरू हो गया, जैसे हमारे यहाँ पतझड़ में होता है या खराब वेदर में पत्ते गिरना शुरू हो जाए. तो जॉनसी सिंपली रिलेटेड हर लाइफ चेन एंड द विल विद द लीफ. उसको लगा कि जिस दिन ये सारे पत्ते एक एक करके गिर जाएंगे, गिर रहे हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा उस दिन मैं मर जाऊंगी. इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ. And Johnsy became completely firm, and she had a strong faith that she will die as soon as the last leaf uh, fell down from the ivy leaf, ivy tree. Ivy tree से जैसे लास्ट पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी. That was her strong
बिलीव। जैसे हमें कभी हो जाता है कि कोई बहुत फेवरेट पेन हो जाता है, लकी पेन हो जाता है, हम एग्जाम में लेकर जाते हैं, लकी शर्ट हो जाता है जो मोही पहन के जाते हैं, क्या है, दैट इज ओनली द साइकोलॉजिकल स्टेट, दैट इज द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ पर्सन विद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर थिंग से, किसी चीज से अपने आप को जोड़ लेना। तो जॉनसी ने मान लिया कि ऐसा हो जाएगा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। So doctor, that's why doctor is suggesting to Sue that Johnsy needs a strong will rather than the medicine. वो कहता है medicine can not cure her. She needs a strong will to live. That's why now he also asked that is there any matter? Is there any disturbance in her life? But she replies there is no such disturbance in her life. But yet doctor said that Johnsy need a very strong will to live. Now she become very purpled. Sue become very purpled to know that Johnsy has decided something. So she talks to her friend. Johnsy decided that she would die when the last I believe fall, and she become very disturbed. And जब कोई छोटा जैसे उम्र का होता है, परेशान होता है, तो घर में बड़े लोगों से बात होती है, उसी तरह से पड़ोस पड़ोस में मिस्टर बर्मन रहते थे, तो उनसे मिलने जाती है और कहती है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, डॉक्टर बोला है, और जॉनसी ने ये मान लिया है कि शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी ट्री विल fall or will be no more. So the Sue told Burman about the Joneses fancy, उसके फैंसी के बारे में इस बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। बहुत गुस्सा आता है बर्मन को, as an old man he says that she is foolish, and he tried many time to convinced that there is no such thing, there is nothing that you will die with the last leaf, when the last leaf will fall down, जब वो गिर जाएगा तो तुम मर जाओगी, बहुत तरह से समझाने की कोशिश करता है, but everything is failed. Now you see in the section 5, John C was encouraged by the last leaf that wouldn't give in the weather. Her will to live returned to her. अब ये खास चीज होती है जब बर्मन को पता चलता है कि ऐसा ऐसा उसने सोच लिया तो मर ही जाएगी, तो बर्मन हमेशा ये कहता था कि मैं अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा बनाऊंगा जो कि मास्टरपीस होगा मेरे ज़िंदगी का। तो इस कंडीशन में ही ऑलवेज टॉक अबाउट हिज गोल, यू सी एवरीवन हैज सम ब्यूटीफुल गोल्स, एंड लाइक कोई सिविल सर्विस में जाएगा, कोई ये जॉब करेगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, कोई बहुत पैसा कमाएगा। उसी तरह से जॉन्सी का भी एक गोल था कि वो बे ऑफ नेपल्स पेंट करेगी। उसी तरह से आप देखें कि बर्मन का भी एक था कि ही विल क्रिएट सम मास्टरपीस ऑफ हिज लाइफ। तो ये सोचता ही है एंड ही ऑलवेज टॉक्स, और जब वो जॉन्सी की कंडीशन को देखता है तो उसको लगता है कि जॉन्सी मर जाएगी, एंड बिकॉज शी हैज डिसाइडेड टू डाई with the with the falling event of the last leaf। जैसे एक रिसर्च किया गया है कि एक टेररिस्ट था, उसके सामने कोबरा रखा गया और कहा गया इस कोबरे से तुमको मरवा दिया जाएगा, उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है, और आर्मी वालों ने ऐसा किया था, और क्या किया था कि एक सुई का पिन उसके पैरों में चुभो दिया जाता है और कहते हैं कोबरा काट लिया, यू नो दैट, और वो कोबरा नहीं काटा था, फिर भी वो कुछ टाइम के अंदर में वो आदमी मर जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ द विल, मैन कैन टर्न एनीथिंग। बिकॉज इस टेररिस्ट के केस में हम क्या पाते हैं कि उसने केवल ये सोच लिया कि इसको कोबरा ने काट लिया और मर गया। तो इस तरह से कोई अपने आप को किसी चीज़ से अटैच कर दे, कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगी। सो दैट इज द पॉइंट, and Burman was very experienced, so he got it that now there is very less chance of Johnson's recovery। तो एक रात में क्या होता है कि बहुत सारा तूफान, 2 दिन के लिए रेनी सीजन होता है और तूफान आता है बाहर, और अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ पर ठंडी और तूफान एक बहुत आम बात है। तो फिर भी पूरी रात बैठ करके मिस्टर बर्मन उस आईवी ट्री को जो पूरी तरह से गिर चुका था, उसे पता था, उसने एक आईवी ट्री को पेंट कर दिया। और जब सुबह होती है तो सू से जॉन्सी बोलती है कि इस खिड़की को खोलो, और देखती है कि 2 दिन के पूरे खराब मौसम के बावजूद भी एक आईवी ट्री बचा हुआ है जिसने उसने 2 दिन पहले देखा था। तो उसके अंदर में वो लगता है शी अगेन चेंज्ड हर माइंड, उसको लगता है कि दैट आईवी लीफ, टाइनी लीफ कैन सर्वाइव इन सच बैड वेदर दैट आई कैन ऑल्सो सर्वाइव, मैं भी जिंदा रह सकती हूँ। सो उसको ये नहीं पता होता है कि वो आर्टिफिशियल लीव है, एंड व्हाई, बिकॉज इट वाज पेंटेड सो परफेक्टली दैट इट वाज लुकिंग लाइक द सेम आई बिलीव। तो इसमें 2 चीज में पता चलती है, पहली कि बर्मन सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी
through his pen, and that particular leaves become also his masterpiece. वो जिस हमेशा masterpiece की बात करता था, तो इतना रियल था कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि ये एक पेंटेड लीफ है। तो इस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी का मास्टरपीस बनाया, और उसने जॉन्सी के लाइफ को भी बचाया। लेकिन आप सेक्शन सी में देखेंगे कि डॉक्टर्स की बात होती है कि पूरी रात ठंडी में बिताने की वजह से जो मिस्टर बर्मन होता है, ही कॉट निमोनिया हिमसेल्फ, एंड हिज केस वाज होपलेस। वो उसको निमोनिया हो जाता है, उम्र ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसकी केस होपलेस होता है। ही वाज अबाउट टू डाई नाउ बिकॉज ऑफ द डिजीज। नाउ सेक्शन 7 में हम क्या देखते हैं कि सू टोल जॉन्सी दैट बर्मन हैड परफॉर्म अ काइंड डीड विदाउट एनी थॉट ऑफ सेल्फ। सो दिस इज द सेल्फ सेक्रीफाइस. Sue reveals that that particular leaf is not the real leaf, and what we were trying to make, what we were trying to make you understand that your life is not related to that leaf, but Mr. Burman uh, has sacrificed his life. He has painted that leaf, and it was looking so real, and this is his masterpiece and saved your life. So this is all about the story. और उसके बाद में हम स्टोरी को जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी रिवील होते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एट फर्स्ट जॉन सी डिटरमाइंड टू डू इफ द लास्ट लीफ शुड फॉल। अगर गिर जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगी लास्ट लीफ? तो उसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है, शी मेड हर हर माइंड टू डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब गिर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी डिसाइड टू डू व्हेन शी सॉ the last leaf still cling to the vine after 2 nights rain and wind? 2 दिन के बाद में भी नहीं गिरता है लास्ट लीफ, तो क्या होता है? शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप हर लाइफ। सो दिस इज यू सी, जैसे कि हमने जो आपको अरेबियन प्रोवर्ब की बात की थी, जिसके पास स्वास्थ्य है जिसके उसी के पास उम्मीद है, जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। सो दैट पर्टिकुलर होप, उसकी उम्मीद ने उसको स्वास्थ्य दिया, एंड स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य ने उसको उम्मीद दिया, और उसकी उम्मीद ने उसके सारे इंटरेस्ट को जिंदा किया कि आई विल नॉट गिव अप। सो दैट इज द रोलिंग central theme of the story, in fact. And there may be another questions, how was it that the cold fierce wind did not blow away the last leaf? कैसे नहीं गिरा पाए? तो इसमें है कि बर्मन, a kind neighbor who was aware of Jones's state of the mind, risked death to paint the last leaf and saved her with his masterpiece. ये वही बात है जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बर्मन समझ गया था कि जॉन्सी का मेंटल स्टेट कैसा है, उसने उस लास्ट लीफ को अपने लाइफ को रिस्क करके किया, एंड दैट बिकम द मास्टरपीस एंड आल्सो सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी। जॉन्सी के लाइफ को उसने बचा लिया। नेक्स्ट, व्हाई डिड सी कॉल द पेंटेड लीफ बर्मन्स मास्टरपीस? बर्मन के इस पेंटेड लीफ को बर्मन का मास्टरपीस क्यों कहा गया? तो बिकॉज इट वाज सो परफेक्ट दैट द गर्ल्स बोथ मिस्टुक इट फॉर द रियल थिंग। उनको ऐसा लगा कि ये जिंदगी का रियल थिंग है, ये इतना परफेक्ट बनाया था मिस्टर बर्मन ने, दैट्स व्हाई इट इज द मास्टरपीस इन मास्टरपीस ऑफ द मिस्टर बर्मन। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि देयर आर बेसिक थीम्स ऑन विच देयर मे बी सम क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, लाइक व्हाट, हाउ डू यू सी लव and friendship, how do you find pessimism, how do you find sacrifice, and what is the power of the hope and optimism? अगर ये आपको power of the hope and optimism की बात है, तो अभी वही जो कोबरा वाला एग्जांपल दिया गया था, you can relate it. love and friendship की बात करें तो there is love, the real love of Burman for the two daughters of the two girls, Sue and John C, and that's why he has sacrificed his life to save their life. And what is the friendship? There is also the friendship and love in Sue's heart for the John C. एक सच्चा मित्र जिसकी बात करते हैं, वो सू को पाते हैं जॉन सी के लिए। एंड शी ट्राइड एवरीथिंग, और एक बार उस जब बहुत बीमार होती है, इस तरह की बातें अपनी फैंसी बताती है कि मैं ऐसे ऐसे मर जाऊंगी, तो सू जॉन से बोलती है, एट लीस्ट यू थिंक अबाउट माई सेल्फ, व्हाट शेल आई डू इफ यू आर नॉट देयर? मैं क्या करूंगी अगर तुम नहीं रह जाओगी? सो दैट इज द कनेक्शन, दैट इज द लव ऑफ अ रियल फ्रेंड फॉर a friend. So this is above of the material thing, this is above of the material gain. So this such type of the feelings is very rare, and few lucky persons of the world has such friendship, that can find such friendship
and love. What is the pessimism? We can say there is pessimism, निराशावाद जिसकी बात करते हैं, all the negative thoughts in John C. And there is sacrifice. Clearly, there is the sacrifice from the side of the Burman, and the power of hope and optimism that you can just see in the deed of Mr. Burman and deed and the revival of the hope in John C. and Sue again. तो इन सारी चीज़ों की डिस्कशन से हम क्या पाते हैं? What is the basic plan of O. Henry? The basic plan of O. Henry is to say that your willpower is everything. Your thinking is everything. You can achieve anything in life and you can lose anything in your life if your thinking is positive and negative. If you are positive, you are healthy. If you are healthy, you are positive. And if you are positive, then you can see the world with full of energy. That's why I have mentioned the Arabian proverb again. He who has health has hope, and he who has hope has everything. अगर शुद्ध भाषा में हिंदी में कहें कि जिसके पास स्वास्थ्य है उससे बड़ा धन कुछ नहीं है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उत्तम धन है. So this is all for today's discussion. Thank you so much for connecting, and in next lecture or next class we will see another parts of the syllabus. Thank you.